Good evening. We will be waiting for a few minutes and then we will start with the today's session. Okay, so let's begin. So today we will be discussing about week 12 um, content on essentials of topology. So let's start with the basics that have been discussed in the lecture.
So before that, let's go back to the Eurozon's lemma that was discussed in week 11. Okay, so that was pending. So we will be taking that in this lecture only. Okay, so first of all, there is a result on normal space that let x tau be a topological space and a comma b be a pair of disjoint closed subsets of x, and f is a function, continuous function from x to closed interval 0 comma 1, such that f of a is equal to singleton 0 and f of b will be equal to singleton 1. Then there exist open sets G comma H subset of X such that A is subset of G and B will be subset of H. Okay, and G intersection H will be empty. That is, both of that open sets will be disjoint. Okay, so we want to mean here that if this is our topological space X tau and this are our two closed sets A and B, so there and there is a function defined from X to this closed interval 0 to 1, which is a continuous function, then we can find such open sets G and H such that G encloses A and H encloses B and they are disjoint. Okay, so this is one result on normal spaces. Fine. Next, so what about its converse? So for discussing its converse, it can be for discussing its converse, first let's see about the Urizin's lemma. So what is that? Let x tau be a normal space and a comma b be a pair of disjoint closed subsets of x. Then there exists a continuous function f from x to 0 comma 1 such that f of x is equal to 0 for all x belongs to a and f of x is equal to 1 for all x belongs to b. Fine. Is it clear what this lemma says? That it is similar to the previous result, but here that we are saying that for all x in A, the f of x value will be 0, and for all x in B, the f of x value will be 1. Okay. Now, next, it has been discussed the Urizen lemma on metric spaces. Okay. So, what is that? So, if you have a metric space x comma tau d and a comma b are closed subsets of x and a intersection b is empty, so you can have this function hx is equal to d of x comma a upon d of x comma a plus d of x comma b. Thus, if you will verify here, then you will get that if x belongs to a, then h of x will be 0, and if x belongs to b, then h of x will be 1. Okay, so on metric spaces, your reason lemma is thus satisfied. Fine. Now there is one more result on normal spaces that we have discussed in last discussion session as well, that let x tau be a normal space, then for each closed f subset of x and for each open set G containing f, there exists an open set H such that this will be holding, right? That if you have a closed subset f of x, then there will be contained in F. And for each open set G containing F, there exists an open set. There will be an open set H such that F will be subset of this H and that will be subset of H closure. That will be subset of G. Fine. So I hope it is clear. Shall we move to the next thing? Next thing we will be discussing about is dyadic rationals.
So let us see what is dyadic rationals. So if you have function f from x to close interval 0 comma 1, then in close interval 0 comma 1, m by 2 to the power n, okay, where you can get it like this. So it is countable dense subset of close interval 0 comma 1. Fine. Okay, so you might have seen this example. Now let's see what is Urizin's lemma proof idea. So it has been given that we have taken f, a function from x to 0 comma 1. For all x belongs to x, f of x will be equal to minimum of r such that x belongs to gr. Okay, so when x belongs to g1 and it is 1 otherwise. Fine. So I hope it is clear. Okay. So next, so using that, we have proved this that if you got two tau open sets such that f is a continuous function and f of x will be 0 for all x in A and f of x will be 1 for all x in B. Okay. Then it has been extended since we proved it for closed interval 0 comma 1. So it has been extended to closed interval A comma B. Okay. So here, such that if we consider f map from x to close interval a comma b, so you will get it as we can extend this 0 comma 1 to a comma b, and it is you can form a new function phi by composition of h of f. So you can see that for all x belongs to a, you will get phi of x is equal to a, and for all x belongs to b, phi of x will be b. Okay. So we have extended the Urizen lemma for a closed interval a comma b, which was earlier defined for closed interval 0 comma 1. Okay. So next, there is Tit's extension theorem. So what is the statement? That let x tau be a normal space and a subset of x be closed and f be a function from a to closed interval a comma b, be a continuous function, then there exists a continuous function g from x to closed interval a comma b such that g of x is equal to f of x for all x belongs to a. Okay. So in short, that if you have a topological space x comma tau and a closed subset A, and if you have a function from A to closed interval A comma B, that is a continuous function, then there exists another function G which will be from x to A comma B such that for all x in A, the value of g of x will be f equal to f of x. Okay. So this is a statement of Tit's extension theorem. Fine. Now for proving this theorem, some prerequisites have been discussed. So there was uniform convergence of sequence of functions. So some basics of real analysis. So what is the uniform convergence of sequence of functions? That let fn be a function from x to r be a sequence of functions from the set x to r, then the sequence fn converges in uniformly to a function f from x to r if for given epsilon greater than 0 there exists an integer n such that fn of x minus f of x will be less than epsilon for all n greater than equal to n, that for some fixed n, and for all x belongs to x. Okay, so here this is the definition for uniform convergence of sequence of function. I hope you know the difference between the pointwise convergence of the sequence of functions and the uniform convergence. Fine. Now next is uniform limit theorem.
So what it is that let x star be a topological space and fn be a function from x to r be a sequence of continuous functions. If fn converges uniformly to f, then f is continuous. Okay. Next, the Weierstrass M test was discussed. So here that given a sequence of functions fn from x to r, let Sn of x is equal to the summation I equals to 1 to n f of I, fi of x. Okay. If this all such functions fi of x is bounded by mi for all x belongs to x and for all I, then there will exist a series of this bounds, that is summation mi. If this series converges, then the sequence Sn, this will also converge uniformly to some function s. Okay. So this is the Weierstrass M test. Fine. So these are the basics. Next, the test extension theorem lemma has been discussed, that is used to prove the theorem. So what is this lemma? That let x tau be a normal space and a subset of x be closed, and f is from a to this closed interval minus r to r be a continuous function. Then there exists a continuous function g from this x to r. Okay, so, that whole real lines are such that this modulus of g of x will be less than equals to 1 by 3 of r for all x belongs to x, and g modulus of g of a minus f of a will be less than equal to 2/3 of r for all a in a. Okay, so this lemma has been used to prove the test extension theorem. Fine. Now, what is the statement of test extension theorem? That let x tau be a normal space and a subset of x be closed, and f is a function, continuous function from a to r. Then there exists a continuous function g from x to r such that g of x is equals to f of x. Okay, for all x belongs to a. So here, earlier we proved it. It is it the lemma was for closed interval, right? Minus r to r. So we are extending it on r. Okay. So for proving it, first, we have proved it for minus 1 to 1, open interval minus 1 to 1, because R and this are homeomorphic. So if it is true for this, then it will be true for R as well. Okay. Then there, the Tikhonov theorem has been proved. So what is it? An arbitrary product of compact spaces is compact in the product topology. Okay. So for proving Tikhonov theorem, the prerequisites were FIP, that is finite intersection property. We have already discussed about it. So what is it? That if X tau is compact, sorry, if X tau is compact if and only if every collection A of closed sets in X tau having FIP, the intersection A of all elements of A is non-empty. Okay. So I hope it is clear. Okay. So now what is finite intersection property? A collection A of subsets of X is said to have FIP if for each finite subcollection A1 to AN of A, this finite intersection should be non-empty. Okay, so this is if this is satisfied, then we say that
The collection has a FIP. Okay. Next, let's see the John's lemma. So what is it? That this John's lemma has also been used for proving the Tikhonov theorem. Okay. So what is John's lemma? Let x comma less than equal to the sign be a this binary operator be a partially ordered set in which every subset which is linearly ordered has an upper bound. Then x is an equal to has a maximal element. Okay. So this is what is John's lemma says. Fine. So here for John's lemma, you should know but what is partially ordered sets. So a partial order on a set X is a binary relation denoted by less than equal to such that okay, so what is partially ordered set or poset? So if a partial order on a set X is a binary relation denoted by less than equal to such that X is less than equal to X for all X belongs to X, that is it should be reflexive. Then if X less than equal to Y and Y less than equal to X, then X will be equal to Y for all X Y belongs to X, that is antisymmetric property. And if X is less than equal to Y and Y is less than equal to Z, then X will be less than equal to Z for all X Y Z in X. Okay, that is the property of transitivity. Okay, so if all these three properties are satisfied by a partial order on a set X with a binary relation less than equal denoted by this sign, then it is said to be a partially ordered set or a poset. Okay, so the set X cubed with the partial order is called a partially ordered set, that is poset. Fine. So I hope it is clear what is poset. Then there some results have been given. The elements x and y of a poset x comma less than equal to are comparable if either x is less than equal to y or y is less than equal to x. Okay. Then a poset x less than equal to is called linearly ordered if every two elements are comparable. Okay. So in a poset, if any two linearly ordered, sorry, if in a poset any two elements are comparable, then we say that it is linearly ordered. Fine. Next, if x comma less than equal to be a poset, then an element u belongs to x is said to be an upper bound when we say that it is upper bound of y subset of x if y is less than equal to y, u for all y belongs to y. Fine. Next, let x comma less than equal to be a poset, then an element f belongs to x is said to be maximal if x belongs to x and m is less than equal to x implies m is equal to x. Fine. So for proving Tikhonov theorem, after this, there is one lemma. So what is that? That let X be a set and there F be a collection of subsets of X with the FIP. Then there is a maximal family of subsets of X that consist F and has the FIP. Okay. So this lemma has been used to prove the Tikhonov theorem. Fine. Now let's see what is Stoneshek compactification. Okay. So what is it? So in some previous lectures, we have seen about maximal and minimal, right? Sorry, compactification. So we have seen about one point compactification and in general compactification as well. Okay, so one point compactification is the minimal one and Stoneshek compactification is the maximal one. Fine. So a compactification of a topological space x tau is compact Hausdorff space y tau dash with x tau as a subspace such that x closure is equals to y. Fine.
Next, two compactifications y1 tau 1 and y2 tau 2 of a topological space x tau are equivalent if there is a homomorphism h from y1 tau 1 to y2 tau 2 such that h of x will be x for all x belongs to x. Fine. Next is completely regular spaces. So what is it? So this is about Stoneshek compactification. Then comes completely regular spaces. So we have seen about normal spaces, then regular spaces. So in between there is completely regular spaces. So what is it? So before that, we need to know about what is T3 half. Okay. So a topological space x tau is T3 half if for every pair consisting of a point x belongs to x and a closed set f subset of x with x does not belongs to f, there exists continuous function f, okay, from x to 0 comma 1 closed interval such that f of closed interval that closed set f will be 0 and f of x will be 1. Okay, so this is the definition for T3 half. Fine. Now let us see. So what is completely regular spaces? So similarly as we saw in the case of regular and normal spaces, so completely regular space is what? T1 plus T3 half. Fine. Now there are some results on them. Then what is it? That normal spaces are completely regular and a completely regular spaces are regular. Then a subspace of a completely regular space is completely regular. Then a topological space having compactification is completely regular. Fine. So these are some results on regular, completely regular spaces. Then comes the concept of embedding that is used in the proof of Stoneshek compactification. Fine. So what is embedding? An embedding of a topological space x tau into topological space y tau dash is a function f from x to y which maps x homomorphically onto the subspace f of x of y tau dash. Okay. So if this happens, then we say that it is an embedding. Then what is the lemma for Stoneshek compactification? So for topological spaces x tau and z tau double dash, where z tau double dash is a compact Hausdorff space, let h from x tau to z tau double dash be an embedding. Then there exists a compactification y tau dash of x tau having the property that there is an embedding h, capital H, from y tau dash to z tau double dash that equals on x. Okay, and the compactification y tau dash is uniquely determined up to the equivalence. So these are lemma statement. You can go through it and the proofs have been discussed. And there is an embedding lemma that says that let x tau be a topological space and let fi be collection of family of continuous functions such that fi is a function from x to closed interval 0 comma 1. Then the family fi separates points from closed sets if for any x naught belongs to x and any closed set f subset of x such that x naught should not be the member of that f. There is a function fj belong to fi such that fj of x naught will be positive and fj at x will be 0 for all x belongs to f. So in this manner, all these members in the family um, of continuous functions will be separated. Okay. Next, there are some statements. So the ideal statement of this embedding lemma is that let x tau be a T1 space and if fi is a family of continuous functions that separates points from closed sets, then the function f from x to product space I over I of 0 comma 1 is closed interval 0 comma 1 to power I such that f of x is equal to fi of x such that I belongs to I is an embedding. Okay. Then there is a result that a topological space x tau is completely regular if and only if it is homomorphic to a subspace of closed interval 0 comma 1 to the power I for some I. Okay. Then the statement for Stoneshek compactification is that let x tau be a completely regular space, then there exists a compactification y tau dash of x tau having the property that every bounded continuous function f from x to r extends uniquely to a continuous function
from Y into R. Okay, so this is the definition for, statement for Stoneshek compactification. Okay, then there are some results that you can go through for the Stoneshek compactification. Fine. Now, I hope if it is clear that you have to go through all the proofs and explanation in the lecture videos. So let's move to the questions. If it is clear, then and the questions will be mainly focused on the basics, okay, because mainly here, in this week and the previous week's two lectures, it has been focused on the proof of the theorem statements, okay. So I have tried to focus on the basic concepts that will help to um, know more about the proofs, okay. So let's move to the questions. So first question is that state whether true or false. Consider the class of real valued functions given by this A. It consists of f1 of x is equal to sine x, f2 of x is equal to sine 2x, f3 of x is equal to sine 3x, and so on, defined on R. Then the class A separates points. Okay, so is this statement true or false? And even justify your answer. Okay, so try solving it and let me know your answers. So it has been discussed in the class that how we can say that the points are separated. So see if you are getting, otherwise I'll explain in the solution part. Just think, and if you can find it, then just try to solve and get the definition for separate, how we say that the points are separated. If you will not get, then I'll be discussing in the solution part. Okay, you said B. How? Can you explain it? And Ajay, what you are getting?
Okay, so what is the answer that you are getting for this question? Is it B or A? He's saying B. And if it is so, why? Can please explain it, like by definition or how? मैम मैम कोई सेट सेपरेटिंग पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स को सेपरेट तब करता है जब दो पॉइंट हम लें उस स्पेस के और हमें दो फंक्शन मिल जाए मतलब Okay, so जो the correct इक्वल हो। answer is B, but why? Can you explain it? The reason? मैम आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। हाँ Okay, okay. It हेलो was not. Yes, yes, yeah, you are audible now. मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ. अच्छा मैम ये कह रहा हूँ कि कोई सेट पॉइंट्स को तब सेपरेट करता है किसी स्पेस के जब हम कोई दो पॉइंट्स लें उस सेट उस स्पेस के और हमें दो फंक्शंस मिल जाए मतलब उस सेट से कि उनकी वैल्यू इक्वल ना हो उन पॉइंट्स हम्म पर। हम्म. तो साइन का जो मतलब जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर हम 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 के बाहर पॉइंट्स ले लेंगे तो फिर 0 से 1 के बीच में होती है. हाँ साइन की रेंज -1 सॉरी से 1 होता है ना. सॉरी मैम -1 से 1 के बीच सॉरी। तो अगर उसके बाहर पॉइंट्स हम ले लेंगे तो फिर डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन कि किसी भी दो फंक्शन मतलब पॉइंट्स पे वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, राइट? हाँ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हाँ, तो पर ऐसा अगर हो -1 हाँ जी ऐसा हो रहा है क्या? अगर आप कोई फंक्शन मान लो f1 ले ले रहे हो, हम्म, ठीक है, हर एक के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी दो पॉइंट ले रहे हो और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है? पॉइंट्स तो हम बाहर से लेंगे ना मैम नहीं. मतलब आर से लेंगे ना स्पेस से। हाँ, आर से लोगे. ठीक है मैम ठीक है। साइन तो पूरे आर में डिफाइंड होता है ना। हाँ हाँ. तो अगर दो पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आएगी। हम्म. ये तो सही नहीं है ना मैम क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है तो अगर टू पाई करते जाएंगे तो दो अगर पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो वो फिर इक्वल हो जाएंगे वैल्यू। तो इसलिए वो सेपरेशन मतलब द क्लास ए डज नॉट सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है. यस मैम। So yes, it is false. Let's see the definition. Let A be the class of functions fi such that I belongs to I be a class of functions from a set X into a set Y. So the class A of functions is said to separate points if and only for any pair of distinct points A comma B belongs to X. There exists a function f in A such that f of A should not be equal to f of B. Okay. So here we are saying about there exists a function, but here in our question, for every function fn belongs to A, fn of 0 is equal to fn of pi is equal to 0. Okay. Hence the class A does not separate points. Fine. So your explanation is correct. Is it clear? Shall we move to the next question? Shall we move to the next question? मैम मेरी एक्सप्लेनेशन सही थी। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है ना कि आप
fn of 0 लो या fn of pi लो, वैल्यू सेम आने वाली है. ओके. Now let's move to the next question. So the next question is, let D be the set of dyadic fractions in the unit intervals 0, comma 1, close 0, comma 1. That is, D is equal to, so I hope you know about the dyadic fractions. So it will be of kind 1 of 1 by 2, comma 1 by 4, comma 3 by 4, comma 1 by 8, comma 5 by 8, like this. Okay. So your options are, then D closure will be open at 0, comma close at 1. D closure will not be equal to close 0, comma 1, or D is dense in 0, comma 1, closed 0, comma 1, or D none of the above. So what is the answer you are getting? You are saying C. Can you explain it? How? By definition, have it been? How by definition of dyadic fractions? How can we prove that if it is option C, then D is dense in 0, comma 1? Now answer this. I already discussed the definition for dyadic fractions. Shall I discuss it again? रेंज निकालने से डेंस कैसे प्रूफ होगा? Shall I share again what is the definition for dyadic fractions? So dyadic rationals will be a function from x to closed interval 0, comma 1.
It will be defined in this form: m by 2 to the power n. Okay, so collection of, okay, it is already given there that it is dense subset. Actually, it was discussed in the lecture that it is dense subset. So can you prove it? It is given directly क्या there that it is, क्या प्रूव करना है मैम कि ये डेंस सबसेट होता है? हाँ, d is dense in 0, 1, close 0, 1. डेंस This में is the मैम answer. क्लोजर बराबर डी क्लोजर इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1 ना? हाँ हाँ, डेंस डेंस यस। it is already been discussed in the lecture, I guess. Yes, dense proof करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि that a closure should be equal to whole set x, right? So here if you have to prove d is dense in 0, 1, so you need to prove that d closure is closed 0, 1 whole. Okay, so not by finding derived set you can show it by, when we say that it is dense, जब आपको हर एक पॉइंट के अराउंड क्या मिलना चाहिए? अगर आप हर एक पॉइंट के अराउंड कोई ओपन इंटरवल लेते हो तो उसके अंदर डी का कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, राइट? मतलब क्लोज इंटरवल 0, 1 में से अगर आपने एक पॉइंट ले लिया ए नॉट, ठीक है, उसके अराउंड अगर आपने एक ओपन इंटरवल बना लिया, तो डेंस कब कहते हैं हम कि उस ओपन इंटरवल में डी का एटलीस्ट एक और पॉइंट जरूर होना चाहिए ए नॉट के अलावा, ठीक है? फॉर कितना भी लेस आप एप्सिलॉन ले लो, मतलब कितना भी छोटा आप ओपन इंटरवल ले लो, ठीक है, तब हम कहते हैं कि डी इज डेंस इन दैट सेट. So try to use this मैम and ये prove. सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं क्या इसमें क्या चीज? कई बार? मतलब इस सेट में जैसे ये 1/2 1/2 1/2 कई बार रिपीट होगा, ऐसे ही सारे पॉइंट्स। नहीं तो नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है. ये जैसे देखिए इसमें है 16/32 है, वो 1/2 है उधर, फर्स्ट उसका एलिमेंट भी वन तो बाई टू है। 16/32 एलिमेंट इसमें है ही नहीं ना. एम दैट इज अपॉन वन टू बाय की टू ओनली. पावर m/2 में एम में कुछ कंडीशंस है क्या? नहीं नहीं, कोई कंडीशंस नहीं है, बट आप जब सेट लिख रहे हो तो वो एलिमेंट को एक ही बार लिखोगे ना. तो 16/32 जब वापस 1/2 आएगा तो यस वो तो मैम लिख यस चुके हैं हम ऑलरेडी. मैम। जैसे 2/4 भी आएगा, राइट? बट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. यस मैम। मैम इसमें जीरो तो इसका क्लस्टर पॉइंट बन ही जाएगा जीरो, हम्म, इसी तरह और भी सारे बन जाएंगे। ठीक है. ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं. सो डी इज टेंस इन क्लोज इंटरवल. Okay. So correct option is C, that is D is dense in closed interval 0, 1. How we can prove it? So to show that D closure is equal to closed interval 0, 1. Okay. So it is sufficient. Okay. So it is sufficient to show that अगर आपको इसको ऐसा दिखाना है कि this is dense. So if any open interval you are taking a minus delta to a plus delta centered at any point A belongs to this closed interval 0, 1, contains a point of D. Okay, so if you can prove this, then it is done. So observe that limit n tends to infinity 1/2n is equal to 0. Fine. Hence there exists a power q, like at 2 to the power n, there exists some q equals to 2 to the power n naught, such that what you will get? 0 will be less than 1 by q, that will be less than delta. Okay. For some, by the definition of limit. Okay.
So consider the intervals like this 0 comma 1 by q, then 1 by q to 2 by q, like this. Okay, up to 1. So if you will take union of all this, you will get this closed interval 0 comma 1. Fine. Now take one of this, say m by q comma m plus 1 by q. Okay, such that it contains a. So what you will get, m by q less than equal to a, and that will be less than equal to m plus 1 by q. Now we have seen that 1 by q is less than delta. Okay, so if you will minus delta from a, so what you will get, a minus delta will be less than m by q. That will be less than equal to a, and that will be less than a plus delta. Okay, so in other words, what did you get, that m by q, one element from this set you got, that is in between a minus delta and a plus delta other than a. Okay, so in the similar way, you can prove that the open interval a minus delta comma a plus delta contains a point m by q which belongs to D. Thus D is dense in closed interval 0 comma 1. Fine. So I hope the proof is clear to you. Is there any doubt? मैम 1 को कैसे शो करेंगे सेपरेटली? क्या चीज 1 को 1 को? क्लस्टर पॉइंट इसका शो करना है। तो सिमिलरली जैसे ये m by q comma m plus 1 by q लिया है ना हमने, यस मैम। तो उसको ये वाला ले लो इंटरवल लास्ट वाला। ये तो जनरल के लिए हमने प्रूफ कर दिया। यस मैम। ठीक है, ये कहाँ से मैम हो गया ये m by q जो है वो ये देखो a हमने माइनस क्लोज डेल्टा? इंटरवल्स किस फॉर्म में लिए हैं, 0 कमा 1 बाई क्यू। ठीक है, फिर अगला हमने ले लिया यस 1 बाई क्यू से 2 बाई क्यू, फिर अगला हमने ले लिया 2 बाई क्यू से 3 बाई क्यू। बस हम क्या कर रहे हैं, एक एक इंक्रीमेंट न्यूमरेटर में कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। इसी तरह से क्यू माइनस टू टू क्यू माइनस वन, फिर क्यू माइनस वन से 1 तक का ले लिया हमने। तो हमने क्या यस किया, मैम। इसमें से कोई भी एक ले लो आप इंटरवल इन जनरल m बाई क्यू कमा m प्लस 1 बाई क्यू दैट कंटेन्स a। तो कोई भी एक ले सकते हो ना आप, क्योंकि m और उसके बाद में हमने एक इंक्रीमेंट ले लिया न्यूमरेटर में। ठीक है, नहीं तो सारे फिर ये इंटरवल कहाँ से उसमें मतलब ओपन सेट्स कवर होंगे m by q m plus 1 by q से? क्योंकि हमें क्लस्टर पॉइंट शो करना है, तो मतलब कोई भी हम ओपन नेबरहुड लें तो उसमें अदर देन उस एलिमेंट का कोई एलिमेंट आना चाहिए उस सेट का। हाँ। यहाँ पर तो आपने स्पेसिफिक एक ले लिया है इंटरवल। तो हम किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ए ले रहे हो आर्बिट्ररी, हम कोई एक नहीं ले रहे ना, मतलब आर्बिट्ररी कोई भी एक एलिमेंट ए ले रहे हो अगर आप 0 कमा 1 में से, ठीक है, अच्छा, तो आप ये उसकी। कह रही हैं कि ये जो आपने क्लोज इंटरवल्स लिए हैं ये पूरे सेट इनका यूनियन पूरे सेट को कवर करेगा, तो हाँ वो हाँ हाँ पॉइंट इनमें से किसी न किसी सेट में आएगा, हाँ हाँ मतलब क्लोज इंटरवल में। हाँ। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। इज इट, इफ इट इज क्लियर, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। Okay. So next question is, state whether it is true or false. So the class C of x comma r of all real valued continuous functions on a completely regular T1 space x separates points. Okay. And justify your answer. Is it true or false? So you know about completely regular T1 spaces and uh, what when we say that it separates points. So use both of this and let me know your answer. मैम एक बार थोड़ा डेफिनेशन शो कर। किस चीज का? यही कंप्लीटली रेगुलर T1 स्पेस। Okay. So
This is the completely regular spaces. So before that, you should know about T3 half spaces. So a topological space is T3 half. If for every pair consisting of a point x belongs to x and a closed set f subset of x with x does not belong to f, there exists a continuous function f from x to closed interval 0 comma 1 such that f of closed f will be 0 and f of x will be 1. Okay. And if it is both T3 half and T1, then we say that it is completely regular space. Is it clear? In the question, it is given completely regular T1. Actually, it is reverse that in the question it is actually T3 half plus T1, that is completely regular space. Okay. So shall we move to the question? Yes, ma'am. Clear. So here it is actually T3 half and T1 space. That is completely regular. Okay. So correct answer is option A. That is true. So how we can prove it? So let A and B be distinct points in X since X is a T1 space. So B is singleton B is closed set. Also, since A and B are distinct points, so A will not belong to this singleton B, right? And by hypothesis, X is completely regular, hence there exists a real valued continuous function. Actually, there should be T3 half. So by hypothesis, X is T3 half, hence there exists a real valued continuous function f on X such that f of A will be 0 and f of that closed interval B will be 1. Okay. So accordingly, we can see that f of A is not equal to f of B. Fine. So as we saw the definition for separate, how we say that points are separated, that we should get a function such that at 2 points, the value of function should not be equal. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. So separation axiom and separated points, this both concept are different. Okay. So is it clear now? Shall we move to the next question? Yes, ma'am. Okay.
So the next question is, let x is equal to the set consisting of this 5 points A, B, C, D, E, and consider this diagram. I hope it is visible to you. So here x is less than equal to y if and only if x is equal to y, or if one can go from x to y in the diagram. Okay. Then does above relation forms a partial order? Yes or no? Try to solve the question. बोथ आर ट्रू कैसे हो सकता है? यस और नो? एक ही टाइम पे यस और नो आंसर कैसे हो सकता है? Use the definition of poset and let me know what is the answer. So consider, let X be a set of these 5 elements A, B, C, D, E, and consider this diagram. Here, X is less than equal to Y if and only if X is equal to Y, or if one can go from X to Y in the diagram. Okay. So does it forms a partial order or not by this binary relation? Justify your answer, whatever you are giving it. Justify it. If you are saying yes, then how? And if you're saying no, then how? Which? मैम पोसेट में सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए ना? हाँ, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप तो लोगे. तो सी एंड बी आर नॉट रिलेटेड Here, बिकॉज वी here कैन we are नॉट गो going. Here we are going in upward direction. Okay. वी कैन नॉट गो फ्रॉम सी टू बी.
सी से ए में जा सकते हैं, फिर उल्टा नीचे आना पड़ेगा लौट के। बट तो वो वो तो तो एरो। डिफाइंड ही नहीं है ना, यहाँ पे दिखा रखा है ना कि आप डी से बी में जा सकते हो, बी से ए में जा सकते हो। मतलब आपको सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, साइडवेज नहीं तो ट्रैवल सी करना है। सी और बी रिलेटेड है क्या मैम यहाँ पर? नहीं। मतलब अभी आपने कहा ना कि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए ना। हाँ, मतलब अगर आप कोई भी दो एलिमेंट देख रहे हो तो x विल बी लेस देन इक्वल टू y, कब बोलोगे आप? या तो फिर x इक्वल टू y हो, ठीक है, यस मैम। या तो फिर आप उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर एक्स टू पाओगे। वाई। तो तो या मैम यहाँ पे यहाँ पर यस मैम, तो सी और बी तो रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर सी एंड बी। नहीं नहीं नहीं, थिंक अबाउट इट, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन। फिर से मैम एक बार डेफिनेशन शो करिए प्लीज। Hmm. So a partial order on a set X is a binary relation such that X will be less than equal to X for all X belongs to X. And if X is less than equal to Y and Y is less than equal to X, then X will be equal to Y and this thing. ओके मैम, मतलब ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है बस वो सिमेट्रिक नहीं होता है बाकी। हाँ। यस मैम, क्वेश्चन शो करिए प्लीज। Ajay, what answer you are getting? Okay, so in diagram it is like E is going towards C, then D is going towards B and C, and then B is going towards A and C is going towards A. Okay, तो अगर आपको E से A की तरफ जाना तो you can go like, तो आप ट्रांजिटिविटी का यहाँ पे यूज कर सकते हो, सिंस मतलब ऐसा है कि अगर आप ई से सी की तरफ ट्रैवल कर रहे हो मतलब ई इज लेस देन इक्वल टू सी कह सकते हो, ठीक है। देन आप सी से ए की तरफ ट्रैवल कर रहे हो मतलब सी इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक। तो अब ट्रांजिटिविटी का यूज करके आप इसको क्या कह सकते हो कि ई इज लेस देन इक्वल टू ए, फाइन। मैम ऑप्शन ए करेक्ट है। पक्का? पोसेट है मैम। ओके, अजय यू आर ऑल्सो गेटिंग इट कोसेट? ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, by the definition only of the poset. I hope you might have justified it. Okay. मैम ये रिफ्लेक्टिव तो है बाय डेफिनेशन, Hmm. बस दो चीज शो करनी है, तो इसमें दूसरा वाला जो है उसमें एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, जब मतलब अगर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पर
मतलब रिवर्स हो, हाँ, बस तो सीधा वो सीधा तो है, है सी ही नहीं। रिलेटेड टू ए, वापस नहीं आ सकते। हम्म। तो ये तो वैक्यूअसली ट्रू है सेकंड कंडीशन। हम्म। फिर थर्ड कंडीशन में है, वो भी देख सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। हम्म। ठीक है। ट्रांसिटिविटी, यस मैम। तो दिस इज पोसेट, ओके। So if it is clear, shall we move to the next question? यस मैम। Okay. So same question, in the same question, you have to find like what is minimal or maximal element. So D, the options are D is the only minimal element, or B, that is E is the only minimal element, or C, that is both D and E are minimal, or D, that is A is not a maximal element. So which of these options is correct? In the same question, same poset, it is poset. So try to find the minimal and maximal element. मैम ऑप्शन बी। ठीक से चेक करो फिर बताओ। डेफिनेशन देखो मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट का। दैट वी डिस्कस्ड आल्सो। मैम इसमें ई के लिए फेल हो रहा है ना। आई डोंट नो, चेक करो बताओ क्या एक सेकंड, एक सेकंड बता क्या रहा हो हूँ, रहा है। रुकिए। मैम ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नहीं, ये भी सही है। अजय इज सेइंग सी, व्हाई सो? एंड इफ इट इज सी देन व्हाई अदर आर रॉन्ग? मैम मिनिमल होने के लिए ऐसा होना चाहिए ना कि वो जो एलिमेंट है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए सारे एलिमेंट से, मतलब रिलेटेड होना चाहिए। यही है ना मिनिमल की डेफिनेशन। और तो भी है यहाँ पर कुछ? हम, और क्या है मैम? मिनिमल मतलब क्या होता है? मिनिमल मतलब वो तो यूजुअल सेंस में यहाँ नहीं कह सकते ना, एबीसीडी को कैसे करेंगे। मतलब काइंड वो ऑफ तो, इन्फिमम। हाँ, काइंड ऑफ इन्फिमम। लोअर बाउंड और इन्फिमम में फर्क होता है ना। तो वही ना, तो मैम डी सबसे छोटा होना चाहिए ना हर एक एलिमेंट से। अच्छा, और फिर ई नहीं होगा? क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाली डी होगा या ई भी होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम मुझे डी और ई दोनों में प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्योंकि डी और ई एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब। अपर बाउंड से, अपर बाउंड से क्या मिलेगा? ये मैम ये ऐसे ट्री देख रहा है जॉन उसकी, लेमा। मतलब फिगर को। जॉन लेमा इसमें कहाँ से आ जाएगी? जॉन लेमा तो ये है कि हर एक बाउंडेड जो सेट होता है उसका कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं, उनका एक अपर बाउंड होता है ऐसे। वो यहाँ पे यूज नहीं होगा आपको, मतलब डायरेक्टली बाय द डेफिनेशन मैक्सिमल एलिमेंट निकालना है। तो जैसे हम सुप्रीमम और अपर बाउंड में क्या फर्क है कि उससे बड़ा कोई नहीं होगा, लाइक इट विल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट? सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो उससे वैसे बड़ा कोई मैक्सिमल नहीं एलिमेंट का होगा। डेफिनेशन भी देख लो एक बार, अगर आपको लग रहा है तो ठीक फिर है मैम कि डी, डी एंड ई आर करेक्ट, मतलब डी एंड ई आर मिनिमल एलिमेंट्स। ठीक है, ये करेक्ट हो गया।
डी करेक्ट है कि यस नहीं? मैम, मतलब ए इज नॉट अ मैक्सिमल एलिमेंट और इट इज अ मैक्सिमल एलिमेंट, क्या है? ये मैक्सिमल है। ओके, अजय, योर आंसर इज ऑल्सो सी? मैम बस एक कंफ्यूजन है इसमें हम्म, कि हम ई और डी को मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं। मतलब ई एंड डी आर नॉट रिलेटेड। उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। यस मैम। ठीक है, so yes, the correct answer is option C, that is both D and E are minimal. So let's see what is the definition of maximal and minimal elements. So let X be an ordered set. ठीक है, ordered set से मतलब है partially ordered set. An element A naught belongs to X is maximal if and only if A naught is less than equal to X, implies X is equal to A. That is, if no element follows A naught except itself. X is equal to A naught. Okay. मतलब उसके पहले उसके बाद आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमल। देन सिमिलरली व्हाट इज ये मिनिमल? एक्स इज इक्वल टू, मैम एक्स इज इक्वल टू ए का क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है? एक्स इज इक्वल टू ए जैसे, नॉट हो जाएगा। हाँ मतलब ये कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देखो, मतलब ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये तभी मैक्सिमल होगा कि अगर आप कोई भी एक्स ले रहे हो, मान लो कि ए नॉट से बड़ा, ठीक है, तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो, अच्छा दैट अच्छा, मीन्स, ये मैक्सिमल की डेफिनेशन, ओके मैम, हाँ, समझ में आ ठीक है, गया। कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं, ए नॉट से बड़ा भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट एक्स विल बी इक्वल टू ए नॉट। यस मैम, यस मैम। ओके, सो सिमिलरली फॉर मिनिमल ऑल्सो, एन एलिमेंट बी नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज मिनिमल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी नॉट। मतलब बी नॉट से अगर आप कोई छोटा ले रहे हो तो वो खुद होगा, ठीक है, उससे छोटा कोई नहीं आएगा। दैट इज इफ नो एलिमेंट प्रिसीड्स बी नॉट एक्सेप्ट इटसेल्फ। सो हियर इस डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग कि डी और ई से लाइक प्रिसीडिंग कोई नहीं आ रहा है, एंड सिमिलरली ए से बाद में भी कोई नहीं आ रहा है। सो ए इज मैक्सिमल एंड डी एंड ई आर मिनिमल एलिमेंट्स हियर। ओके, तो मैम इसमें इसमें जरूरी नहीं है कि सारे कंपेरेबल हों, मतलब हाँ सारे एलिमेंट्स, हाँ हाँ जैसे यहाँ पर ई और डी कंपेरेबल नहीं है हाँ तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, मतलब। हाँ। ठीक। ठीक है, इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ओके, so one more question related to this maximal and minimal. So consider R with the natural order, then it is totally ordered, or option B, that is it has a minimal element, option C, that is it has a maximal element, option D, that is all of the above. मैम ऑप्शन ए। Okay, why so? मैम सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं इसमें, एक टोटली ऑर्डर में यही होता है कि सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल होने चाहिए ठीक और है, तो वो अपोजिट होना टोटली चाहिए ऑर्डर्ड हो लॉन्ग। गया। यस मैम। और बी और सी तो यहाँ डिस्कार्ड कैसे करेंगे? कौन सा? बी और सी डिस्कार्ड कैसे हो रहा है? बी और सी डिस्कार्ड करेंगे उसको आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यूज करके मैम। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उससे छोटा हमें एक मिल जाएगा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से। हम्म, कोई एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सुटेबल इंटीजर से, तो उसको हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यस इट मैम। हैज अ मिनिमल एलिमेंट, it does not has a minimal element and not a maximal element. Okay, so यस the मैम। correct option is A, that is it is totally ordered. Okay, so when do we say that? For your reference, the definition. So when do we say that a poset is a totally ordered? So a partially ordered set A is said to be totally ordered if for every a comma b belongs to A, either A should be less than equal to B or B should be less than equal to A. Okay, so here the real number set with the natural order defined by x less than equal to y is an example of a totally ordered set. Fine. And by the definition, we can show that it has no minimal and maximal elements. Okay. So is it clear? Shall we move to the next question?
Okay. So the next question is, let B consisting of this set 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 be ordered by x is a multiple of y. Then which of these options is correct? Option A, that is 2 and 3 are the only maximal elements of B. Option B, that is 9, this is 9. 9, 6, 4, 8 and 10 are the minimal elements of B. Or C, that is 6, 8, 9 and 10 are the only minimal elements of B. Or D, that is 5, 6, 8, 9, 10 are the only minimal elements of B. So solve it. It is similar question and let me know the answer. मैम ये ऑप्शन बी में आपने क्या लिखा हुआ है? 1B 4 8. 9, 6, 4, 8, 10. ओके मैम ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक से चेक करो मैक्सिमल गलत है क्या एलिमेंट्स मैम? और मिनिमल एलिमेंट्स. मुझे नहीं पता है, एक बार सॉरी ठीक से सॉरी चेक ये करो. मैक्सिमम पूछा है. आई एम सॉरी मैम. मुझे लगा कि मिनिमल है वो. टेक योर टाइम, ठीक से चेक करो कि कौन कौन से मैक्सिमल एलिमेंट है और कौन कौन सा मिनिमल एलिमेंट है. दोनों बताओ. मैम इसमें आपने ये नहीं बताया कि x इज रिलेटेड टू y है या y इज रिलेटेड टू x है. X is a multiple of y. तो किसको किससे रिलेटेड कहेंगे? ये जरूरी तो X नहीं कि less than सिमेट्रिक हो. equal to y होगा अगर x is a multiple of y. अच्छा.
Yes, it is correct that x is a multiple of y, then we will say that x is less than equal to y. मैम ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. Confirm. यस मैम. What are the maximal elements you are getting? मैक्सिमल और मिनिमल. हाँ ठीक है, इसमें ऑप्शन सी इज इसमें आस्किंग सी अबाउट भी मिनिमल मिनिमल एलिमेंट. बोला जा रहा है, मैक्सिमल क्या मिल रहा है मैं ये पूछ रही हूँ. मैक्सिमल. मैक्सिमल मैम मुझे लगता है कि 2 3 होंगे क्या. तो फिर तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा. अभी जो हमने डायग्राम बनाया था एक्स रिलेटेड वाई के लिए, जिस तरह से हमने अपर ऊपर जाने के लिए बनाया था, राइट? तो वैसे ही डायग्राम बना के चेक करो. तो डायग्राम मैम बना सकते हैं क्या हर बार हाँ इसी हाँ. तरह का. हम्म. अच्छा. तो हमें तो मैम इसमें ऐसे करना पड़ेगा ना, जो बड़े से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा. हम्म. 10 ये 9 ऐसे कर. हाँ, ट्राई करो. अगर एक्स वाई का मल्टीपल है तो एक्स नीचे आएगा, वाई ऊपर रहेगा. यस मैम. 9 और 10 नहीं होगा. चेक करो एक बार डायग्राम बना के. मैम ऑप्शन सी तो करेक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है. वो करेक्ट है, पर कैसे आया? वो मैंने कर लिया है, अब कैसे मैं आपको बताऊं. ठीक है, वो कर लिए. मैक्सिमल क्या आ रहा है? मैक्सिमल. अच्छा. मैक्सिमल 2 5 3 4. एक सेकेंड. यस मैम 2 5 3 4. ये इसके मैक्सिमल है. सही नहीं है. तो आप लोग ट्राई कर रहे हो या सॉल्यूशन एक देखना है? सेकेंड मैम, मैम 4 नहीं है, 4 नहीं है, 2 3 5 है. ओके. हाँ सही अब है. सही है. इसको आप हाँ गलत नहीं कर सकती. हाँ सही है. 2 3 5 मैक्सिमल है और 6 8 9 10 मैम आप मिनिमल है. ऐसे इतना इजीली कैसे देख पा रही हैं. इजीली आप डायग्राम बनाओगे तो पता चल जाएगा. मतलब कि इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो उनमें डायग्राम बना के हो जाएगा वो. हम्म. अच्छा. मतलब ए बी सी डी वाले मतलब भी अगर होंगे उनको भी फाइनाइट एलिमेंट आपके पास फाइनाइट हो तो हाँ. आप बना के देख सकते हो. अच्छा मैम. इन्फिनिट के लिए रहेगा तो फिर थोड़ा लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे. अजय, यस आर यू मैम गेटिंग ऑप्शन इट? सी करेक्ट. अजय, आर यू गेटिंग इट? ये ट्राई कर रहे हो? ओके. सो शैल वी मैम सी दिस? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैम, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको डायरेक्शन बनानी चाहिए थी. हम्म. वो एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई जो आपने लिखा है. बहुत से लोग ऐसे भी जैसे डिफाइन कर देते. तो वो जैसे आपने एक्चुअली एक्स ऐसे इक्वल. ही डिफाइंड था क्वेश्चन में कि x इज अ मल्टीपल ऑफ y. यू हैव टू राइट, मतलब थिंक ऑफ दिस. बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि x डिवाइड्स, सॉरी, a डिवाइड्स b. दैट मीन्स a इज लेस देन इक्वल टू b. ओके. अच्छा जो मतलब करेगा पहले. उसको हम. यस मैम. ठीक है. तो क्वेश्चन यही था. आई हैव गिवन यू दिस थिंग. ओके. मैम हो ठीक गया. है. ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 6 8 9 10 आर दी ओनली मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ बी. तो आप डायग्राम बना के देख सकते हो.
So अगर x is a multiple of y, then we will write it as x is less than equal to y. That is x नीचे आएगा और y ऊपर की तरफ रहेगा. So 9 is multiple of 3, तो ऐसे बन जाएगा. अगेन 6 is also multiple of 3 as well as 2. ठीक है, तो उसके दोनों तरफ जाएंगे एरोस. ठीक है. और 2 किसका मल्टीपल है? सॉरी, 2 से और कौन फॉर्म हो रहा है? 2 4. मैम 1 का मल्टीपल है 2। 1 नहीं है ना हमारे सेट में. यस मैम। मैम ठीक है. आपने पूछा ना इसलिए बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. 4 goes to 2. देन 8 इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देन 10 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, सो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. ओके. फिर जैसे हमने पहले किया था, सो मैक्सिमल एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे जिसके ऊपर कोई एरो नहीं जा रहा है? सो दैट इज 3, 2 एंड 5. एंड व्हाट आर द मिनिमल एलिमेंट्स जिनकी मतलब प्रीसीडिंग कोई नहीं है, राइट? सो दैट इज 9, 6, 8 एंड 10. ओके. सो मैम दीज आर द ये मिनिमल एलिमेंट्स. यूनिक कब होंगे मैम? मैक्सिमल मैक्सिमल मिनिमल मुझे लगता है जब कंपेरेबल हो सारे एलिमेंट्स, मतलब टोटली ऑर्डर्ड होगा, तब वो एलिमेंट्स यूनिक हो जाएंगे शायद। मतलब आई डोंट नो, आई विल नॉट कंफर्म इट. सो जस्ट लुक इनटू इट. ओके. हाँ, टोटली ऑर्डर रहेगा तब तो यूनिक आएगा ही आपके पास सुप्रीमो. सारे क्योंकि कंपेयर हो जाएंगे ना मैम, हाँ. किसी न किसी रिलेटेड होंगे। यस मैम। हम्म. ठीक है. तो इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट x1 d1 up to xm dm be metric spaces, and let p is equal to this tuple a1 to am, and q be this tuple b1 to bm, be arbitrary points in the product set x is equal to product set from I equal to 1 to m xi. Then which of the following is a metric on the product set x? So you have been given this functions, distance functions, d of p comma q defined as this, that is under root d1 of a1 b1 whole square plus dot 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 dm of am bm whole square. Then b given by maximum of this, and d of p comma q is summation of this or all of the above. So Ajay is saying D, all of the above. Reason being, भाई ऑप्शन ए कैसे किया है वो थोड़ा बताना, एक्सप्लेन करना। so this will be related to which of the theorems that have been discussed in the week? मैम टिकनॉफ से है क्या? हम्म. टिकोनॉफ से ही, उसके ही प्रॉपर्टीज में से है. Yes, Ajay, it is about Tikhonov. यस मैम, ऑल ऑफ दी अबव। Okay. So by the Tikhonov theorem, by using that, and we can prove that all of the above are forming the product मैम set. टिकनॉफ से कैसे रिलेट कर रही हैं इनको, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? टिखनॉव से रिलेटेड नहीं है, मतलब जैसे कि उसकी जो टिखनॉव थ्योरम क्या कह रहा है कि आप जो आर्बिट्ररी प्रोडक्ट लोगे, अगर कॉम्पैक्ट है सो इट विल आल्सो कॉम्पैक्ट. ओके. नॉट रिलेटेड टू टिखनॉव, बट हाँ प्रोडक्ट स्पेसेस का यूज किया है. ओके. सो तो एक्चुअली मतलब ऐसे मैम जैसे। यस यहाँ पे मैम। ये चीज बताना चाह रहे हैं कि मोर ओवर द टोपोलॉजी ऑन एक्स इंड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द अबव मैट्रिक्स विल बी आल्सो अ प्रोडक्ट टोपोलॉजी. ओके. तो जैसे कि इन मैट्रिक स्पेसेस से आप इंड्यूस करके जो टोपोलॉजी बनाओगे वो क्या होगी? प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी. ठीक है. ओके मैम। So these are the examples that we were about to discuss. मैम एक प्रूव करते हैं फर्स्ट वाली। करो आप लोग
ट्राई करो। मैम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। हम्म। 8। हो रही है ना प्रूफ, सेकंड प्रॉपर्टी भी हो जाएगी राइट, क्योंकि हर एक एलिमेंट मेट्रिक है राइट। तो वो हर एक इंडिविजुअली सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी।
मैम यस। कोर्स कोर्स का तो कोर्स मतलब एक्सपायर हो गया एक तरीके हाँ से, हाँ। तो मतलब सपोर्ट रहेगा आपका बाद में भी, लाइक मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि मेरा भी सारे वीक्स का इस कोर्स से रिलेटेड यस मैम यस मैम एक्चुअली जो मतलब टाइमलाइन था क्वेश्चन के आंसर्स करने के, वो 10th यस अक्टूबर मैम था, ठीक है। यस मतलब 10th अक्टूबर तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो दैट विल बी आंसर्ड, ऐसा है। बाकी आई आस्क सर, लाइक, 12 तक मतलब समझा नहीं मैं मैम, मतलब मतलब उसके पहले आप के जो लोग, क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो रिप्लाई करेंगे आप, हाँ ऐसा। आफ्टर दैट यू वोंट रिप्लाई। आई गेस उसके बाद आएगा ही नहीं ना, डिस्कशन फोरम विल गेट क्लोज्ड। नहीं आप डिस्कशन मत लीजिए, पर जैसे वो ग्रुप ही खत्म कर देंगे क्या? हाँ, मैं नहीं कर दूंगी, क्या इट विल गेट क्लोज्ड। मतलब वो डिमोलिश हो जाएगा उसके बाद? हाँ। अच्छा मैम। और मैम सर के जो लाइव सेशन थे उनके बहुत सारे मतलब अभी इनकम्प्लीट है कुछ, वो बोले थे कि लाइव इंटरेक्शन होगा, तो तो वो होंगे आई क्या? आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब कितने लाइव इंटरेक्शन सेशन होते हैं मुझे उसके बारे में भी नहीं पता, 2 या 3 होते हैं। 2 हो गए ना दो आपके। हुए थे मैम। हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली आई डोंट नो नहीं तो अबाउट वो दैट कि बोले थे 12 वीक कोर्स यस में कितने लाइव इंटरेक्शन सेशन होते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोग ने कोई और कोर्स ज्वाइन किया हो तो आपको मे भी पता हो। लाइक सर। 4 वीक कोर्स में तो एक ही बार होता था। यस मैम। मैम ये है कि जैसे सपोज ये तो बंद हो जाए ग्रुप, तो आपको जैसे मेल कर देते हैं, तो आपको जब कभी टाइम मिले तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा। मैम ये जो टिकनॉफ वगैरह है, ये जितना भी आज डिस्कस हुआ, ये मोस्टली मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड है क्या ज्यादा, मतलब इसका यूज होता है? मेट्रिक स्पेसेस नहीं, हाँ।
मतलब इकोनॉम वगैरह तो ज्यादातर मेट्रिक स्पेसेस में ही उसका स्टेटमेंट ही यही है। वो तो टोपोलॉजी के लिए है ना पूरा। स्टेटमेंट मैट्रिक्स स्पेसेस के लिए थोड़ी है केवल। ओके मैम।
Okay, then thank you for this session. If you don't have any doubts, so we are leaving.